News at 5, powered by Oil India Limited, in association with Everyday Spices, Accoland Amusement Park, Annapurna Foods, Junior Holics, and Biz Farm Biscuits. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma speaks against alleged conversion in the garb of providing education, says government schools in tea gardens will ensure no one needs to change religion in exchange for education and health facilities. Manipur Chief Minister N. Biren Singh slams activist of a Myanmar-based rights organization for allegedly trying to disturb peace in state, says law will take its own course. Activist Mark Haukip apologizes for insulting legendary freedom fighter Rani Gaidinliu. Brisk communication on between top brass of Core Committee on Naga Talks and NSC and IM leadership to finalize date for crucial meeting likely to take place before NSC and IM's emergency National Assembly meet. Another shot in the arm for Manipur's war on drugs. Mao Council extends support to campaign. And locals in Arunachal's Tirap district take to the streets against frequent kidnappings by underground groups, chant slogans demanding peace and security. Hello and welcome to the News at 5. I'm Ronak and we start the bulletin with the big story we've been tracking today. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has taken a dig at those carrying out alleged conversion of the tea garden populace in exchange for education and health facilities. With the Assam government giving a massive push to education in the tea gardens of the state by opening as many as 96 schools, Chief Minister Sharma said that children from the tea gardens will no longer have to suffer due to lack of schools, which has led to exploitation in the past. Without directly taking any names, the Assam Chief Minister added that while everyone has the right to embrace religion of their choice, people cannot be enticed with facilities to give up their religion. Chief Minister Sharma made the comments while inaugurating model schools in tea garden areas in Sonitpur district today. The Assam Chief Minister added that the absence of good schools in the tea garden areas had been a big hindrance to the progress of the tea garden communities. He said that he has no problem if someone converts because of his own will, but nobody should get converted because of the absence of good schools and hospitals. School nai karone, hospital nai karone, amar bagisar kiman manuhor jibonar poriborton hol. Schoolot ami pohilo, Don Boscot pohilo, Shillongot goi pohilo, ঘুৰি আহিলো আমাৰ ধৰ্মটো নোহোৱা হৈ গল বলে কিয় অমুকে স্কুলত পঢ়াইছে কাৰণে আমি ধৰ্মটো বদলাই ললো ধৰ্মটো আমি যি খুশি নিজৰ তাকে লব পাৰো কিন্তু স্কুল আৰু হস্পিটালৰ অভাৱত আমি নিজৰ ধৰ্মটোৰ পৰা আঁতৰি যাব নালাগে নিজৰ মনত ভাল লাগিছে বেলেগ কথা কিন্তু স্কুল আৰু কলেজ দিয়াৰ দায়িত্ব হল চৰকাৰে আজি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বাগিচাৰ মানুহে যথেষ্ট কষ্ট পালে আজি এই স্কুল দিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো এই স্কুলৰ পৰা বহুত ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ জন্ম হওক প্ৰফেসৰৰ জন্ম হওক শিক্ষকৰ জন্ম হওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো And on to the big story from Manipur now. Rights activist Mark Haukip, who was arrested for allegedly inciting enmity between communities through his social media posts, has tendered an apology for quote-unquote mistakenly defaming the good image of freedom fighter Rani Gaidinliu in a social media post back in November 2021. Haukip said that the post was put up unintentionally and that he did not expect it to provoke such serious consequences and hurt the sentiments of the people. Haukip also appealed to the general public to accept his sincere apology.
It may be mentioned that protests had erupted in Manipur's Churachandpur district after Mark Haukip was arrested from Delhi for allegedly inciting enmity between communities through his social media posts. Yes, viewers, a big development from Manipur that we have been tracking. Rights activist Mark Haukip, who was arrested for allegedly inciting enmity between communities through his social media posts, has now tendered an apology for his quote-unquote mistakenly defaming the good image of freedom fighter Rani Gaidinliu in a social media post from November 2021. Haukip said that the post was put up unintentionally and that he did not expect it to provoke these serious consequences that it did and hurt the sentiments of the people. Haukip also appealed to the general public to accept his sincere apology. It may be mentioned here that protests had erupted in Manipur's Churachandpur district after Mark Haukip was arrested from New Delhi for allegedly inciting enmity between communities through his social media posts. Meanwhile, reacting to the arrest of Haukip, Manipur Chief Minister N. Biren Singh said that the law will take its own course. Chief Minister Biren Singh further added that being a so-called rights activist does not give an individual the freedom to post anything and everything on social media. Chief Minister Biren Singh termed the entire episode relating to Mark Haukip as an ugly interference by an outsider to spread hatred amongst various communities in Manipur. He also questioned as to how a Myanmar-based rights group could interfere in the affairs of the state. No, many people were arrested. Not Mark is not the only one, but law will take its own course. Let the law take their own course, his own course. We should not interfere in the governance. As a government, we need to have balance. We are also not looking on one community. We are looking for the nation. We are looking for the state as a whole. We are not against anybody. We are against the element who are trying to bridge the peace between the communities here in the state. Those guys who are trying to destabilize the peaceful coexistence of the state has to be. Law will take its own course. Yeah. Human right. He is from Myanmar. Clearly seen in his address in the Facebook and the WhatsApp and everywhere in the even in the the Twitter. You see here, President International Human Rights Association in charge of Myanmar. You see. I'm not telling lies. In charge of Myanmar, how he can interfere in the internal matter of the Manipur, internal matter of the India? The question is how he entered, how he was staying in the India. This also a question because I have to save the nation. I have to save the state. I cannot succumb to pressure by someone who are trying to grab our land. All right, I'm being joined now with the phone line by my colleague Sharat Chandra from Imphal to bring us all the latest updates. Sharat, finally, an apology has been tendered by the rights activist Mark Haukip for his social media post from back in November 2021, and he has appealed to the general public as well to accept what he calls his sincere apology for insulting and defaming the image of a freedom fighter by the name of Rani Gaidinliu. What more would you like to add at this point in time, Sharat? Ronak, Mark Haukip tendering apology or not, I think it's up to him. But so far as the government in Spain is concerned, N. Biren Singh government government in Spain is very clear that anybody could not indulge in any kind of antisocial these elements. And so far as Mark Haukip is concerned, Chief Minister N. Biren Singh categorically stated that Mark Haukip belongs to one of the human rights body based at Myanmar, and himself, that is Mark Haukip, is the president of the one human rights association based in Myanmar. And the Chief Minister also raised the question that Mark Haukip, how he can interfere in the internal matter of a state or of a nation. And Chief Minister also very clearly stated that being a human rights activist
anybody has not given any kind of permission to post this head comments on the Facebook or Twitter. And yes, according to the Chief Minister Biren Singh, a team of this state police team and also with the help of the Delhi police have already arrested Mark Haukip. And in the days to come, Mark Haukip may bring to the Manipur. And the Chief Minister also given a very big message that anybody who are indulging in the anti-social like activities, that posting of head comments in the social media, so that this could disturb the peaceful coexistence in Manipur will be dealt with the law of the land, Ronald. Right. Now, Sharad, the Chief Minister has indeed raised some very pertinent questions here as to how a Myanmar-based group or a rights activist from neighboring Myanmar can interfere in the internal affairs of Manipur. So, is this something that the state authorities are now actively looking into, Sharad? Yeah, according to the Chief Minister to have all the information, and the Home Department, State Home Department is keeping a very strict vigil in on any activities of the Mark Haukip and other any individual who are spreading this head comments in the social media. And Chief Minister Biren Singh very clearly stated that no one is going to spare, and strict actions to be taken those who are spreading head comments, which could trigger a communal disturbance, disturbing the peaceful coexistence as Manipur is inhabited by the different communities, and state government cannot remain as a silent spectator, Ronald. Right, Sharad Chandra, thank you very much for joining us this evening and bringing us all of those latest updates. All right, we now cut across live to Agartala, where the CEO is briefing on the by-elections in 4 assembly constituencies. Take a look. और এখানে যে 4টি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি যে ভোটিং হবে এখানে সবচেয়ে বেশি ভোটার আছে 6 আগরতলা মধ্যে 51,639 और सेकेंड नंबर আছে সুরমা এসসি কনস্টিটিউয়েন্সি 47,259 তারপরে টাউন বরদওয়ালি 46,583 আর सबसे कम আছে 43,373 যুবরাজনগর তো আমাদের এখানে 221 আছে পোলিং স্টেশন सबसे বেশি পোলিং স্টেশন সুরমাতে 60 বরদওয়ালিতে 56 আগরতলাতে 55 और যুবরাজনগরের মধ্যে 50 তো পোলিং স্টেশন হচ্ছে যেখানে আমাদের ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট রাখা আছে একটা পোলিং স্টেশন কিন্তু একটা বিল্ডিং মধ্যে 2 3 4 5 পর্যন্ত পোলিং স্টেশন হতে পারে দ্যাট ইজ কল্ড এজ পোলিং লোকেশন তো লোকেশনের সংখ্যা কম এটা আছে 139 only out of so 139 locations are their buildings তো যেহেতু এই বছর 23 জুন মানে মনসুন মধ্যেই ভোট হচ্ছে তো আমরা চেষ্টা করব এটা ভালো বিল্ডিং মধ্যে যেখানে যদি ওই দিন বৃষ্টি হয় তবে ভোটের কোনো বাধা হবে না এরকম আমরা প্রস্তুতি নেব তো আমাদের রিটার্নিং অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছে তো আমাদের যে মিটিং উইথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ আমরা আগামীকাল আমরা সবাই পলিটিক্যাল পার্টিকে আমরা মিটিং জন্য কল করেছি তো যে যে আবশ্যক জানকারি আছে আমরা ওদেরকে দেব আর আমরা আপনাদের সবাইকে
অনুরোধ করব যে বাই ইলেকশন নিয়ে যে তথ্যগুলি আমরা আপনাকে দিয়েছি আপনার মাধ্যমে আপনারা সবাই পৌঁছে দেবেন और इलेक्शन डिपार्टमेंट के ये बाई इलेक्शन करार जন্য আপনারা সবাই সহায়তা করবেন এই আশা আমি রাখছি ধন্যবাদ मीटिंग এখানেই হবে सेक्रेटरीट 12:30 बजे है 12:30 Sir, what measures have you taken for free and fair election? What would be the security arrangement? See, we have gone through the past record of these 4 assembly constituencies. এখানে কত ভোট হয় মেল ফিমেল কত কোথায় কম বেশি হয় এখানে পোলিং স্টেশন ওয়াইজ আমরা আগের রেকর্ড আমরা চেক করেছি কোথায় কোনো ভায়োলেন্স অথবা কিছু আগে হয়েছে তো এরকম আমাদের ক্যাটাগরি আছে নর্মাল vulnerable critical কোথায় কোথায় vulnerable and critical दोनों তো এরকম আমরা ক্যাটাগরাইজেশন আমরা করেছি তো সেই অনুযায়ী সিকিউরিটি দেওয়া হবে আর এখানে সিসিটিভি কভারেজ হবে আর একটা পার্সেন্টেজ আমরা ওয়েবকাস্টিং করব তো আমাদের রাজ্যে ইলেকশন অনেক ফেস্টিভ মুড মধ্যে হয় অনেক হাই পার্সেন্টেজ ভোটিং হয় তো আমরা যে প্ল্যান করেছি সবাই এখানে অংশগ্রহণ করবেন আর সবই ফ্রি ফেয়ার ট্রান্সপারেন্ট মেজার্স মধ্যে ভোটিং হবে এখানে অবশ্যই ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থেকে অবজারভার থাকবে তো আমরা ওদের সঙ্গে কাজ করে ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হবে এটা তো আছেই এটা সব জায়গায় যেখানে অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এবং পার্লামেন্ট ইলেকশন হয় এখানে নর্মালি অন দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট দে সেন্ড দ্য সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাভেলেবিলিটি আমি মনসুন সিজন আছে তো আমরা দেখছি এটা কোথায় কোন জায়গাতে আছে So what exactly was the composition of the security personnel that will be deploying in these things? Because you said that depending on vulnerability and criticality, they will be deployed. that our district magistrates and SPs are working on that. They have actually worked. So based on their assessment, we'll send the requirement to the election commission, and through MHA they normally send the forces. So it is assessment done by the DMs and SPs jointly. They do the assessment, and as per that vulnerability and criticality, they deploy the security. When is the security assessment meeting scheduled? Is it already done? No, that is a process, not a meeting. So that process, since these vacancies were there for last so many months, अनेक मार्जाओ the vacancy छिलो, तो हमारे बेटा सबसे प्रस्तुति था के, तो ये प्रस्तुति प्रक्रिया अनुजाई, हमारा assessment करे नहीं थी. It is dynamic condition এটা change হয়. Normally, as we go along also during the election process, so we continue to make assessment. What is the criteria of that webcasting which will take place, and will it be in all the centers? Because security is a concern. Earlier elections were not that. See, we are doing CCTV coverage. Okay, so now webcasting is additional feature, and webcasting needs a lot of infrastructure support. So wherever there is a vulnerable, critical, or any local assessment is there, so RO also recommends. So normally it is said that webcasting should be around 50%. Okay. 15 or 15. गाइडलाइन है, लॉ नहीं है. 15 है, नॉर्म्स है. 50% के आसपास हम लोग करेंगे. जितना जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर. 50. 50. So vulnerable center point. नहीं दे वो तो अभी है DMSP का रिपोर्ट में है. ठीक है, ज्यादा डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ द पोलिंग स्टेशन. समझो उसमें नॉर्मल से ज्यादा वोटिंग हुआ, नॉर्मल से कम वोटिंग हुआ,
समझो एक ही कैंडिडेट को, एक ही पार्टी को ज्यादा वोटिंग एक्सट्रीम में हुआ, या कोई वायलेंस हुआ, या उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत सारा कंप्लेंट था, ये इसके ऊपर वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট স্টেট গভর্নমেন্টের ডিসিশন, স্টেট ওয়াইজ ডিসিশনের সঙ্গে কি কোনো ক্ষেত্রে যদি কনফ্লিক্ট করে বিষয়টা সম্পর্কে कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। जैसे ही हमारा इलेक्शन कल डिक्लेयर हो गया तो वी कम्युनिकेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली फॉलोज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। আমি যে বলেছি এটা কি যুবরাজনগর এবং সুরমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জেলাতেই মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট হবে। স্টেট ওয়াইজ কোনো ডিসিশন যদি স্টেট ওয়াইজ দিস নো ডিসিশন ইলেকশন, দিস ইলেকশনস টু দ্য অ্যাসেম্বলি, জেনারেল ইলেকশন और বাই ইলেকশনস আর হেল্ড অ্যাজ পার দ্য এশিয়া গাইডলাইন। এখানে স্টেট লেভেল ইন্টারপ্রিটেশন করার কোনো স্কোপ নাই। দিস ইজ ইউনিফর্ম অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। ঠিক আছে, দিস ইজ গাইডলাইন্স আর স্ট্যান্ডার্ড and these are issued from time to time. একটা কনফিউশন রিকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন দ্য স্টেট একদম ব্যাক পেজে এখানে এমন কোন পার্টির নাম উল্লেখ নেই যারা এখন এডিসি চালাচ্ছে, এটা একটু যদি একটু ক্লিয়ার করে দাও। Now we have to see whether they have applied for recognition or they have got recognition. Recognition जने अप्लाई करते हुए recognition जन्यो এটা ইলেকশন কমিশন থেকে অনুমোদন নিতে হবে। তো এটা আমরা দেখব। All right, we'll slip into a very short break here, viewers, but don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. ও বাহ, ও বাহ, অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। Evening Prime, the prime time news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে, ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে। এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खी? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। Evening Prime, the prime time news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it.
पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। Welcome back, viewers. You're watching the news at 5. Before we continue, let's have another look at the headlines. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma speaks against alleged conversion in the garb of providing education, says government schools in tea gardens will ensure no one needs to change their religion in exchange for education and health facilities. Manipur Chief Minister N. Biren Singh slams activists of Myanmar-based rights organization for allegedly trying to disturb peace in the state. Says law will take its own course. Activist Mark Haukib apologizes for insulting legendary freedom fighter Rani Gaidinliu. Brisk communication underway between top brass of core committee on Naga talks and NSC and IM leadership to finalize date for crucial meeting. Meeting likely to take place before NSC and IM's emergency National Assembly meet. Another shot in the arm for Manipur's war on drugs. Mao Council extends support to campaign. And locals in Arunachal's Tirap district take to the streets against frequent kidnappings by underground groups, chant slogans demanding peace and security. And welcome back, viewers, and on to Manipur once again. Chief Minister N. Biren Singh's War on Drugs 2.0 got another shot in the arm today with the Mao community extending their support to the campaign. Representatives of the Mao Council, along with Minister Letpao Haukip, called on Chief Minister N. Biren Singh to extend their support to the war on drugs. Take a look. The peoples who are coming out openly in support of a government policy war against the drugs, war against the poppy plantation, war against the drug smuggling. It is, huge support I'm getting now. But now today, especially the Mao communities, which is immediate neighboring with the Nagaland, is coming forward and coming down up to here with a letter in supporting the war on drugs of the government. It is the happiest moment. I am really thanks the people of the Mao Council, people of the Mao Student Union, people of the Mao Mothers Association, and the Mao Parents Body. I would like to appreciate. Above this, they initiated one thing today is very encouraging. Once the Imphal Dimapur road was, taken as like a problem road, but now the Mao people themselves has come out and they are making a safety national highway safety schemes under the leadership of the honorable MLA Dikho. They are going to plant the trees. They are going to make the safer national highway, not to prevent from the accident. So this kind of positive things I didn't expect. But thank God, and I thank to the peoples of the Mao community for such innovative and encouraging mission. And besides, the Mao Naga Women Welfare Association also exuded confidence that with the participation of communities in the war on drugs, the campaign will definitely succeed. Since 1980, we have been going on this prohibition, means prohibition of selling wild and drugs and all. And so we are continuing till today. But then there's so many things that we can't go without the support of government and also without the support of all the people. But then we are very happy today that our government is going on with the mission war on drug. So we are very happy that we will surely success our mission.
And on to another big story now, viewers. Locals across different villages in Arunachal's Tirap district took to the streets today protesting against abduction and insurgency by the NSCN. The protest follows the recent abduction of Khilang Hangfok, the Gram Panchayat chairperson, by the NSCN from his residence on the 20th of May. As per inputs, Khilang was abducted by the outfit for non-payment of self-imposed house tax and indent tax since the last 2 years. It has been learned that Khilang was harassed mentally in captivity and released yesterday. Subsequently, the villagers of Sanilam, Lonyan, Laju and Kothum opposed the harassment, abduction and demands of the NSCN, carrying out protest rallies in their respective villages. Take a look. Peace. NSCN शर्म करो NSCN शर्म करो NSCN शर्म करो बंद करो बंद करो बंद करो Peace. Peace. NSCN Live Tira. NSCN Live Tira. NSCN Live Tira. And staying with the frontier state now, the air gun surrender Abhiyan in Arunachal Pradesh is bringing in a revolution as far as preservation of wildlife is concerned in the frontier state, where hunting has been a community practice for time immemorial. Taking this a step ahead, the Dibang Forest Division in Roing today held a mega air gun surrender ceremony at Gidi Notko. It may be mentioned here that the air gun surrender Abhiyan is spinning new hopes of wildlife conservation since it was launched in March. Over 2,000 air guns have been surrendered in the state so far. Meanwhile, our colleague Meme Mangfi was at the air gun surrender ceremony and caught up with some of the people who surrendered their weapons. Take a look. Hello viewers, reporting you from Roing, where voluntary airgun surrender is being organized by Dibang Division Forest in collaboration with DFO Mihao Wildlife Sanctuary Division Roing. You see Arunachal Pradesh, where hunting has been a community practice since ages, and today people for good cause especially to maintain ecology system, people are voluntarily surrendering their air gun, and this idea of air gun surrender abhiyan has been running quite successfully. It's been a year that this idea has been implemented and initiated by the State Forest and Environment Minister Mama Natung. So here is a report. So right now we have one Gaon Bura here with me, just beside me, who came here to attend the air gun surrender abhiyan. सबसे पहले सर आपका नाम बताइए और आप कौन सा बस्ती की जो आपका जो गांव बुरा है आप वो बता दीजिए। हाँ, हम बोलूंग बस्ती का गांबुरा हेड गांबुरा बोलूंग का रामपोगिरांग। तो आप बोलुंग बस्ती से आया है यहाँ पे ये एयरगन सरेंडर मीटिंग ये इसको अटेंड करने के लिए ना ये कैंपेन में, तो आपका बोलुंग बस्ती की तरफ से और आप एज ए हेड गाँव बुरा आप क्या कहेंगे ये कैंपेन को लेके जो एयरगन सरेंडर अभी जो हो रहा है हर जगह जगह पे? हाँ, ये अच्छा है। हमारा वहाँ में भी ऐसा इसी सामने हमारा ये घर में लड़का लोग आकर एयरगन जमा किया और उन लोग को हम थैंक यू वेरी मच देख के उन लोग को हम विदाई दिया। और ये हमारा वहाँ मैं हमेशा उन लोग को बोलते हूँ ये उन लोग एयरगन बुक के घूमने मत जाओ। मेरा नाम है इप्रा मेकोला, मैं यही दिवांग वैली से बिलोंग करता हूँ और जैसे अपर लोअर दोनों तरफ से मैं बिलोंग करता हूँ एक इदू मिश्मी कम्युनिटी से। और ये जो एयर गन सरेंडर अभियान जो जिस मुहिम चलाया जा रहा है इसमें हमको बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि हम लोग जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स लोग अगर इनिशिएटिव नहीं करेगा, अगर हम एयर गन्स को सरेंडर नहीं करेगा तो बाकी लोग सरेंडर नहीं करेंगे। तो सरेंडर नहीं करने का मतलब हमने जो चिड़ियों के जो जानवरों की जो संख्या जो है हम ही घटा रहा है, इस तरह सोच करके हम लोग ने एक गिल्टी फील करते हुए हम लोग ने ये अभियान को साथ सहयोग दिया। इसको ज्ञान को बांटना, समाज को ज्ञान बांटना तो हम लोग जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ही करना चाहिए, यही सोच करके। और आपके द्वारा जो ये मैसेज जो जा रहा है सुनने वालों सब साथ दे ताकि जो हमारा अरुणाचल का जो शिक्षित लोगों से पहले ही
ये काम चालू करना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले वही करना चाहिए, साथ दीजिए, वही मैं कहना चाहता हूँ। जी, सरेंडर अभियान हम लोग शुरू किया है। हाँ, ऑनरेबल मिनिस्टर जब घोषणा किया है तो हम लोग तुरंत एक प्रोन में निकाला है टू बी एन एग्जाम्पल, तो लोग को जागरूकता एनकरेजमेंट दिलाने के लिए हम लोग पहली बार किया है। इस महत्वपूर्ण कदम को किसी ने नहीं उठाया। जब ये मामा नातुंग जी ये जिम्मा संभाला है, उन्होंने ये बहुत अच्छा बल कदम उठा दिया कि हम सब भी समझते सोचते हैं कि ये हंटिंग बंद करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएशन नहीं होने से इसको सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सही तरीका से कर नहीं पा रहा था। और हमारा भी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, परम कर्तव्य है कि जो हमारा बीजेपी सरकार दिल्ली हो या अरुणाचल, तो एक ग्लोबल वार्मिंग इकोसिस्टम को बचाने का हम भारत सरकार हिंदुस्तान जो है नेतृत्व करता है। और इसके बदौलत हमारा नरेंद्र मोदी जी का, हमारा हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का जो नाम जो है ऊंचा ये में है, रेस्पेक्ट जो दूसरा कंट्री लोग जो देते हैं। और बाकी इसको जो प्रोफेशनल वे में डेली जो हंटर्स है उनको उनके लिए क्लियर कट मैसेज है कि चलिए आप भी बंद कीजिए सरेंडर। आज 76 एयरगन ये डिस्ट्रिक्ट में सरेंडर हुआ, तो इसका मेरा जो अभी आपको पता है कि 17 मार्च 2020 से शुरू हुआ ये, तो अभी 1 साल कुछ हो गया। तो इसको सरेंडर करवाने का मेन ये है कि अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश में से है, जिसमें से 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है, और फॉरेस्ट कवरेज जो है देश में से नंबर 1 है, जो 80% फॉरेस्ट कवरेज है। लेकिन हमारा जो ट्रैवल लोग अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रैवल जो बसते हैं जिले जिले गांव में, तो इतना बड़ा जंगल है, तो जंगल में धीरे धीरे अपना जो पशु पक्षी है, वाइल्ड लाइफ है, वो खत्म होते जा रहा है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि पेमा खांडू जी ने कि डिपार्टमेंट में विभाग को इस प्रकार का काम को शुरू करे। तो हमने 17 मार्च अपना गांव से ही हमने शुरू किया, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपना इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से और अपना देवयार सर्कल से मैंने शुरू किया, जिसमें से 46 गांव सरेंडर हुआ। उसके बाद इसको पूरा प्रदेश में जन भागीदारी बनाकर ये अभियान में चला रहा हूँ, और सरकार का नीति में और पूरा सभी जनता उसको सपोर्ट कर रहा है। Well, yes, this is the first time that the air gun surrender campaign जो अभियान चला रहा है पूरी अरुणाचल पे, पहले बार रोइंग पर हुआ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये कैंपेन अपने आप में बहुत गहराई, बहुत डेप्थ कैंपेन है। इसका उद्देश्य आपको पता है कि हमारे परिवार को कैसे बचाएंगे, हमारे पशु पक्षी को कैसे बचाएंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी, द पीपल ऑफ रोइंग आर वेरी हैप्पी दैट the Honorable Minister Mama Natung ji decided to come here, and people have voluntarily surrendered their air guns and things like that. So, सर आज जो अराउंड टोटल 76 एयर गन सरेंडर किया गया है, and a person from this area only have submitted around 2 or 3 lakhs cost उनका जो एयर गन सरेंडर किया गया है। तो and also there is this opinion that ये कहना है कि इतना एक्सपेंसिव एयर गन सरेंडर किया जाता है, and moreover जो हंटिंग है वो बहुत काफ़ी सालों साल से यहाँ पे अरुणाचल में प्रैक्टिस किया जाता है। तो नॉट दिस पीपल दे सेज दैट कि चलो एयरगन तो सरेंडर किया जाएगा, बट देयर शुड बी इंसेंटिव और कंपनसेट बाय गवर्नमेंट। तो उसके क्या कहेंगे आप? सी देखिए, जो लोग सरेंडर कर रहा है गन्स, दे आर सरेंडरिंग इट वॉलंटरीली। हाँ, किसी किसी का राय हो सकता है कि इंसेंटिवाइज करना है, पर इसका ऑलरेडी इंसेंटिव्स है सरकार के तरफ से। द इंसेंटिव्स इज दैट आपका फॉरेस्ट कवरेज, आपका पशु पक्षी बचाए जाएंगे। उन लोग यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसी को यही देखने के लिए आता है, यहाँ घने जंगले को देखने आता है। दीज आर द इंसेंटिव्स, और इसी के जरिए ही तो हमें पैसा मिलता है।
All right, it's time for another very short break here, viewers. Don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, wow. বাহ অপূর্ব ভ্যারাইটি অপূর্ব মূল্য ডাউনলোড মিশো Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। Welcome back, viewers, and on to the big story related to the Naga peace talks. Well, brisk communication is underway between the top brass of the core committee on the Naga peace talks and the NSCN-IM leadership to finalize the date and time for a crucial meeting to give a definite shape to the peace agreement. Chief Minister Nephew Rio and some of the top core committee members are expected to meet the NSCN-IM leaders on the 29th of May ahead of the NSCN-IM Emergency National Assembly meet on the 31st of May. It may be mentioned that the core committee on the Naga political issue had a crucial meeting in Kohima yesterday to discuss on the talking points with the NSCN-IM leadership. And well, there is a sudden urgency in things as far as the Naga peace talks are concerned after the core committee's recent visit to the national capital. A member of the core committee and UDA co-chairman K. Nenu informed Northeast Live earlier in the week that the government of India may be willing to quote-unquote incorporate the Naga statue in the Indian constitution, besides allowing for the use of the Naga flag at cultural events. Nenu added that the ball is in the NSCN-IM's court now, and everything will depend on whether the Naga political group takes the offer and closes the deal. All right, coming back to Assam now. As the situation in Dima Hasao district is gradually returning back to normalcy, it seems as though all is still not well in the hill district. Well, Topodisa is one such village in the district which witnessed massive landslides after incessant rainfall. In the village, many houses and parked vehicles were damaged as they were toppled down with debris of the heavy landslides. With no assessment being made till date, the actual loss in this village has not yet been ascertained. The damages to dwelling houses caused by landslides have become a serious matter of concern, with as many as 35 houses damaged out of the 125 in the village. Likewise, in the Johoya Raji village, many houses have been left damaged. The recent landslides due to heavy rainfall have damaged at least 15 dwelling houses of Johoya Raji. The woes of the villagers have reached such a level that the villagers are not afraid of staying in their house as it might be crashed any moment due to the landslides. Meanwhile, Assam Rifles are coming to the aid of the villagers for whom it has become next to impossible to make the situation fall back into place. Assam Rifles is providing recovery assistance for the vehicles that were toppled down in the landslides. जोहायरा जी इटू हम लोग का सब इटू माटी टू गोर टू लैंडस्लाइड हो गया सब चला गया और गोर भी चला गया सब माने दाब गया और उसका बाद में इटू माने हम लोग का गोर का सामने सामने वाला भी 3-4 टू गोर इसे भी दाब के चला गया माने थोड़ा थोड़ा करके इटू जाते ही रहता गोर छोड़ दिया अभी ना गोर छोड़ दिया अभी बैठने नहीं सकता गोर में डोर से सुबह में जब हम लोग ये सो रहा था उस टाइम में
ज़्यादा बारिश हुआ, ऐसे सुना ना, आवाज़ भी सुनना, माटी सब गिरा ना, तो उठ के देखा तो हम लोग का घर का बाहर में भी माटी पूरा लैंडस्लाइड हो गया। हमने भी बाद में खबर करा और नीचे तरफ में भी बहुत लैंडस्लाइड हुआ, जैसे कि वो क्लब का नीचे उस तरफ में भी हुआ, ये आसपास में भी है, बहुत सारा है लैंडस्लाइड हुआ। ये मोटामोटी एरिया में कितना तो घर खराब हुआ? मोटामोटी मेरे ख्याल में 35 ऐसे सुना। 16 तारीख सुबह 3 बजे 4 बजे जैसे हुआ, फिर 17 तारीख को भी आया, 2 दिन 3 दिन लगातार आते रहा। ये तो हमारा खेल में तो यहाँ तो थोड़ा रिक्स है, रहना चाहिए। उस दिन में तो 14 डेट में ना हमारा घर एकदम घर में हम खाना पकाया और में एकदम माटी गिरा, हमारा घर सब टूट गया, बर्तन सत्तन भी नहीं मिला, खबर दूसरा जो So there you have it, viewers. As you can clearly see, things still not well in Dima Hasao district of Assam. Although things are indeed gradually returning back to normalcy, there are still a few isolated places where people are still reeling from the impact of the devastating landslides. Topodisa is one such village in which people have suffered extreme difficulties due to many houses being damaged and even parked vehicles which have been toppled down due to the heavy landslides. And of course, with no assessment being made till date, the actual loss sustained has not yet been ascertained. All right, on to the big national focus now. Prime Minister Narendra Modi has landed in Chennai to lay the foundation stone for 11 projects worth rupees 31,500 crores. Prime Minister Modi is on his way to the Jawaharlal Nehru Stadium, where he will formally lay the foundation stone for the various projects. And this is Prime Minister Modi's first official visit to Tamil Nadu after the DMK captured power in last year's assembly elections. And what you see on your screens right now, viewers, are the live visuals coming in from Chennai at this point in time. And we are being told that Prime Minister Narendra Modi has already landed in Chennai, and as you can clearly see, a very, very warm reception in place for the Prime Minister. Yes, viewers, as is clearly evident on your screens, a large crowd of people having gathered on the streets of Chennai to welcome and greet Prime Minister Narendra Modi.
And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. Northeast Live, the most viewed news channel.